Yes, sir. Last time, Last time we had uh, started with the Azure. Okay, yes, so in this lab we have two types of groups, right? So what are two types of groups? There are two types of groups, no? yes, sir. Azure AD group. No. Okay. Okay. Yes, sir. I'll tell. Those are roles. You're talking of roles. I'm talking of groups. One Groups. was Okay. assigned group, and other was dynamic group. So what is the difference between the two? One was assigned group, and other was dynamic group, right? So what is the difference between the two groups? In the assigned we can Sir, मतलब जो ग्लोबल एडमिनिस्ट्रेटर होता है वैसा ना हम कोई भी रोल असाइन कर सकते हैं No, पर्टिकुलर no. the one is dynamic and one is assigned. Assigned are done. Assigned groups are manually assigned. Manual assigned. The users will be assigned manually. Manually, yes. And in dynamic, it will happen automatically by the system. Group is a collection of users. यस यस मतलब Yes. आप कोई भी रोल उसको असाइन कर सकते नहीं हैं रे बाबा, क्या है तो कुछ पूरा अलग ही बोलते तू। कौन सा दवाई खाया अभी, ये सब बिल्कुल सब अलग ही बात करते। Assign group मतलब the user we have to manually add user to the group. That is assign group. हाँ And dynamic group means what? What is dynamic group, Rufi? in which we don't have to assign, Manually assign it करने की जरूरत automatically नहीं। assign the name. It will assign based on the job title. Job title. Based on job title, it will assign it automatically. Okay? ओके So that is called a assigned. So assigned is when it is assigned automatically based on job title. So when you create the user, that time you create the job title also, right? So based on that, it will automatically assign. यस
थोड़ी देर इधर बैठो. Yeah, so dynamic user and dynamic user means based on the job title, it will assign the membership. That is dynamic user. And assign user means what? Manually assign. Manually, the user will be assigned manually, correct? जी sir. Okay, Yes, Minal, sir. Rufi. Yes, sir. Rufi getting it? Yes, sir. All right. So now, just a second. I'll just open that file. Yes, sir. Yes, Manoj, sir. Color वाला experience. So what did we do? The task one, do you remember what all we did last time in task one? Do you remember? We sign into Azure portal. We sign into the Azure portal, then We went to user settings. Then we went into Rufi's account, and then we created a new administrator user. Then that you gave title, job title, address, email address was there. Then object ID was there. Then that user created another user who had lesser access. we created दो यूजर क्रिएट किए थे सर. दो यूजर क्रिएट किए थे. एक तो हमारा ग्लोबल था जो नॉर्मल था. उसके बाद दूसरा वाला था जो यूजर एडमिनिस्ट्रेटर था, जिसको थोड़ा लेस एक्सेस था. देन थर्ड वाला हमने वो इनकॉग्निटो मोड पे जाके हमने बनाया था एज पर एक्सेस मैनेजमेंट फॉर आशुर बिजनेस. we created one user and then we gave him the user access. हाँ. We gave him the role of user administrator, right? Yes sir, global एडमिनिस्ट्रेटर. Yes. नहीं global नहीं. सेकंड वाला, सेकंड हाँ, वाला. user Sir, administrator का रोल दिया ना. yes, sir. यस सर, सेकंड वाला. हाँ, सेकंड वाला नहीं, फर्स्ट वाले को ही. फर्स्ट वाले. We मतलब create सर जो हम डिफॉल्ट वाला है उसको नहीं गिनते क्या? डिफॉल्ट वाला तो ऑलरेडी ग्लोबल एडमिनिस्ट्रेटर ग्लोबल ही है. एडमिनिस्ट्रेटर ही. जो रूफी इज द ग्लोबल एडमिनिस्ट्रेटर. Yes. गेटिंग मी? तो हमने उसको एक बनाया ना बाद में, जी सर. राइट? यस सर. देन वी क्रिएटेड अ यूजर. एक यूजर क्रिएट किया एंड देन we assign the role of user administrator so that he can create another user. Then this user which was created, we use in private browser. In private browser use karke, then we went over there, and then this user created another user. यस सर. He could create another user, but he didn't have access to anything else. यस सर. Getting? हाँ. And then we came back here, right? So that's what we did last time. इतना हुआ था ना task 1 में. So two users were created basically, and with the proper job title. We changed the usage location also. We changed, right? यूनाइटेड स्टेट्स. United States. That part we did. यस सर. वो user setting हो गया. But user creation was done after that. यस. After that we created the user. Correct? यस सर. The next is to create the Azure AD groups with assigned and dynamic membership. So the next thing is to create the group. So we have seen that there are two types of group. One is assigned, another is
dynamic. So two types of groups we are having, correct? Assigned group and dynamic group. Yes, sir. So we have to work on that now. So we'll log into the Active Directory. So let's log in. Let's go to the Azure portal. Okay, do you see this? My screen you are able to see, right? Yes, sir. इसका पासवर्ड हमने डाला था ना, पासवर्ड क्या डाला था? sft@1234, राइट? जी सर 56789 नहीं नहीं, ये खाली ये एडमिन यूजर है ना, ग्लोबल एडमिनिस्ट्रेटर, उसके लिए. Yeah, so what it's saying, please enter email address where we can contact you regarding any Azure service support or security matter that arises within your subscription. तो ये डालो ना रूफी. हेलो रूफी. रूफी, कैन यू हियर मी रूफी? Yes. इसकी जरूरत भी नहीं एक्चुअली, क्यों ऐसे? Okay, so back in Azure portal where sign into user account, navigate to overview blade of the Azure AD tenant, and in the manage section click licenses. See, for dynamic dynamic facility you require a premium license. See, here it's mentioning Azure AD Premium P1 or P2 licenses are required in order to implement dynamic groups. Okay. So here we go to manage section में जाना पड़ेगा, right? हाँ कौन सा manage section में जाएंगे? User account, right? Overview blade of the Azure AD tenant. So Azure AD tenant means we have seen Intra ID, na? Microsoft Intra ID इसमें जाना.
इसमें गए, मैनेज सेक्शन में गए, हम्म, तो इसमें कौन से इसमें जाना है अभी अपने को? गो टू द ओवरव्यू ब्लेड में जाके, मैनेज में जाके लाइसेंस, सो License. लाइसेंसेस, so we are in the overview blade, right? We go to licenses, so this is the license. Okay, so in this what we do, we go for that premium license. यहाँ पर है क्या, दिखना पड़ेगा अभी, you updated it, terminator. Then in my section click all products, click license, in my section click all products, all products. Hmm. So here we are, then click try buy and activate the free trial of try buy. तो यहाँ पर एक फ्री प्रोडक्ट है ना, देखिए एंट्रा आईडी P2. P2. So we can, with this P2, you can gain access to advanced security features, richer reports, and rule-based assignments to applications. Your end users will benefit from self-service capabilities and customized handling. So you go for free trial. Say activate. Okay. Yes, sir. Sir, this free trial will be also for 1 month. Yeah, yeah. So I'm activating this. So email ID, enter. We'll check if you need to create a new account for Microsoft P2 trial. आपका क्या है, रूफी है ना क्या? Nore Rufi. नोरे रूफी, हाँ, नोरे रूफी, पूरी रूफी, रूफी at क्या था? gmail.com, gmail.com है ना रे क्या? नंबर नहीं था सर इधर, इतना ही था। इतना ही ना आपका ईमेल आईडी रूफी? Yes. आपका आईडी इतना ही है ना, बराबर है ना इतना? Yes, sir. Okay, so I'll say next. To create an account to get started, continue as अरे यार ये क्या, रूफी, नूरी, स्टूडेंट, सॉफ्ट टूल्स, फोन नंबर क्या है तुम्हारा रूफी? व्हाट्स योर फोन नंबर रूफी? Sir, 86 86, हाँ, 25 25 97 96 97 45. 9645, 8625979645, right? Company name United States. Text me. Country code India. इंडिया किधर है? इंडिया, इंडिया दिख ही नहीं रहा इधर। डायरेक्ट अल्फाबेट डाले तो आ रहा है क्या सर? तो
सर +91 में ऊपर होना चाहिए था, हाँ +91 में होना चाहिए था ऊपर, नहीं 200 में दिख आ रहा रहा ना। है, 91 में होना चाहिए। इंडोनेशिया है बट इंडिया नहीं दिख रहा है। होगा सर, नीचे होगा। सर ये सिंगापुर। अल्फाबेटिकली नहीं है। हाँ, रैंडम है बीच में से। एक मिनट सर, थोड़ा ऊपर जाओ। होगा कहीं ना हाँ कहीं। हाँ मिला। हाँ हाँ। मिला रे, मिला मिला मिला। सेंड वेरिफिकेशन कोड आया आपको कोड? रूफी कोड दो आपका। रूफी आया कोड आपको? सर उसने भेजा चैट में। चैट पे भेजा। यस सर। I'll put this code। यार कोड नंबर क्या है? 195,387। 195,387। वेरीफाई। पासवर्ड। पासवर्ड ये डाल रहा हूं, आप लिख के रखो, ये देखो ये पासवर्ड डाला है। फोटो ले लो, फोटो। ये कभी पूछता नहीं, अभी क्यों पूछ रहा है इतना पता नहीं। अरे इसमें क्रेडिट कार्ड क्यों पूछ रहा है? माय गॉड। अच्छा, ये पूरा शुरुआत से अलग अकाउंट बन गया। टू मच यार, टू मच। फ्री ट्रायल गलती हो गया, फ्री ट्रायल मांग के इसको। कभी बोलता नहीं है ऐसे, अभी एक्टिवेट हो जाता है डायरेक्टली है ना। एक्चुअली आपका आईडी जो है जीमेल है ना, इसलिए शायद वो इतना बोल रहे हैं। कार्ड is only used to verification and won't be charged until you buy something। क्या करे, इसको यूज करे नहीं करे फालतू में। forget it। नहीं पाहिजे आम्हाला। हाँ, एक बार फिर से ट्राई करता हूँ एक्टिवेट करने के लिए। This account already exists with another Microsoft service। साइन विद दिस थिंग, अभी इससे साइन इन हो गया ये। कंटिन्यू।
क्या हुआ? Out. All right, so we don't want that because then it will be creating a problem, right? Unnecessarily it is asking too many questions. तो इसमें ये होगा कि डायनेमिक मेंबरशिप नहीं चलेगी अपनी, ठीक है ना? वो वाला एक्सरसाइज नहीं चलेगा unless Rufi, are you comfortable to create account with that? Normally पूछता नहीं है. I don't know why it is asking here. Free trial activate. कभी कभी पूछता है, लगता सही है। Hmm? कभी कभी पूछता है ऐड में फिर से कार्ड इसमें लिखा है एक्टिवेट करना रहता है ना, तो फिर से पूछता है। अच्छा. Okay, no problem. So we'll just go ahead and see what all we can do. उसके बिना एक्सरसाइज पूरा नहीं होगा बिकॉज डायनेमिक नहीं आएगा उसमें, राइट? सो टास्क 2 में और क्या है, लाइसेंस प्लेट में जाके एंड टू न्यूली क्रिएटेड यूजर काउंट, assign all license options to prevent it to in the Azure portal level to and assign all license options. And the Azure portal navigate back to, now we create the groups. So, but when we create the groups, it will not give us the dynamic user option now because we don't have. So what we can do is, so we go to the
home, enter ID. So when you click on group now, so when you click on new group like this, so in this C, membership type only assigned. It doesn't allow me to change. Dynamic, it is not, it's giving me only one option now here, right? Getting, hello? Yes, sir. Sir, can you please put your mouse on that small sign near membership type? It was written, something was written there. I wanted to read it. What, where? Near membership, yeah, that is select dynamic or Yeah, access. yeah. Okay, but this is grayed out, so we only have assigned. Okay, sir. ठीक है, देखा आपने? Yes, sir. Next. ओके, तो यहाँ पर अभी ग्रुप टाइप सिक्योरिटी ग्रुप नेम आईटी क्लाउड एडमिनिस्ट्रेटर्स, यू कैन मेक दैट, बट so group name क्या है यहाँ पर? What is the group name? IT cloud administrators, right? So here we put IT cloud administrators like this, okay? And membership type we are not able to select here, and अगर dynamic user रहेगा तो then we can add dynamic query also here. Dynamic query डाल के we can, okay? Sir, what is dynamic query? Dynamic query is like we are giving rules, like if the job title equals cloud administrator, then you make him member of that particular group automatically. So when you say dynamic group, Hmm. membership type dynamic करेंगे तो फिर हमको rules create करने देगा यहाँ पर. Okay. But since So we are then not that having, person will be able to have access to multiple groups. hmm, no, no, not multiple groups. Just a second. Okay, let me add the description also. Cloud IT, Contoso IT Cloud Administrator, right? Contoso Cloud, Contoso IT Cloud Administrators. So Cloud IT Administrators. Contoso Cloud IT Cloud Administrators. Create.
So the group will get created. So refresh here, you will actually see the group here like this, correct? So coming back to your question, we have seen now dynamic group means what? So in the dynamic group, which means that the members are assigned automatically. हाँ तो यहाँ पर रूल उसमें we have to put a rule for that group ना कि the rule is that if the user job title equals cloud administrator, automatically those users will be added to the group. Getting so that Okay, is dynamic query. जो जो क्लाउड so एडमिनिस्ट्रेटर if है the job, ऑटोमेटिकली ग्रुप में असाइन हो जाएगा. हाँ, ओके. getting so यस सर. yes, sir, getting. so it will allow us to, it will when you create a dynamic group, you have to put a dynamic query also there. You have to it will give you options for putting the query like this. कि ये job title है equals this, then you assign to that like that. Getting me? यस Yes, सर. sir. So like that it will be. Okay, sir. Right? यस सर. Yes. So save the rule by clicking add expression and save. Similarly, we create another dynamic group. So it is asking to create two dynamic groups actually. एक और ग्रुप की आईटी सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर उसमें भी हम डालेंगे कि अब जॉब टाइटल इक्वल्स सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर इट विल ऐड द यूजर ऑटोमेटिकली टू दिस ग्रुप बट सिंस वी डोंट हैव अ डायनेमिक हियर वी हैव टू use the manual only assign group. Security type, so group name is here IT system administrator. Just copy paste from here. The electricity is failing today, you know. वो पावर का इशू है. Here we are. These questions also I'll put. So actually, ट्रायल अकाउंट वो ऑटोमेटिकली इसके साथ एक्टिवेट हो जाता है नॉर्मली. अभी तक जितने भी मैंने क्लासेस लिए उसमें तो ऑटोमेटिकली हो जाता था. तो ये just put the new rules there. So assign, so create like this. Okay, so this group also got created like this. Okay, if it is dynamic, then we have to again we can assign put a rule there that if the job title equals एक अच्छा मैंने गलत बना दिया. एक आईटी लैब एडमिनिस्ट्रेटर्स का बना दिया ना इसमें. हाँ वो पहला सेकंड वाला कॉन्स्टो आईटी सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर है. कॉन्टो से बराबर है सर. आईटी लैब एडमिनिस्ट्रेटर डिस्क्रिप्शन उसका गलत दिया. कॉन्टोसो आईटी लैब एडमिनिस्ट्रेटर. कॉन्टोसो आईटी एडमिनिस्ट्रेटर से आएगा डिस्क्रिप्शन उसका. हाँ
फर्स्ट का जो आईटी सिस्टम है, सेकंड वाला आईटी लैब है, डिस्क्रिप्शन में आईटी लैब है ये सब। Will it allow me to make changes in the description? Let me just checking. तो डिलीट होता है? हाँ, डिलीट करके बना सकते हैं groups. Let's delete it and make it again. है ना इसमें delete groups का ऑप्शन है ना? Delete groups. Deleted groups. हाँ. तो ये lab इस तरह से ही है actually. If you see this lab, it's that only, that you create the rules and it's not going. Microsoft वाला भी ऐसे hang होता है. Can you all see? Yes, sir. If I select this, इसको ही select करके we will put click on delete up here. बस ये हाँ हो इधर जाएगा. से delete कर सकते हैं ना. हाँ. Delete करेंगे. Okay. इसमें Refresh. date देता है क्या? On which date they were created? ऐसा कुछ? रहेगा प्रॉपर्टीज में रहेगा. सेटिंग्स जनरल. ओके नाउ वी क्रिएट द ग्रुप अगेन. Okay. तो डिलीटिंग. इधर बैठो तुमको दिखता हाँ नहीं. सर। उसको Then न्यू ग्रुप. देन ग्रुप नेम क्या है? ग्रुप नेम इज IT Contoso IT Contoso IT आईटी लैब. नहीं ऊपर था ना ये वाला ना अपने हाँ डायनेमिक. जी ग्रुप नेम आईटी IT system सिस्टम administrator एडमिनिस्ट्रेटर्स. हाँ यस दिस इज द ग्रुप नेम. Contoso IT system administrator दिस इज group descriptions is this, right? Create. हाँ तो create हो गया. हाँ Then another group to create is Rufi. You're watching Rufi. We create one more. ये तो manually assigned वाला ही करना था. So security IT lab lab administrators. administrator Choose this.
group. Description is this. Okay. Create. Okay. Refresh. Refresh. Here we have 3 groups. Okay. Now we add members to this IT cloud administrators members, right? Members हम ले लेंगे इसको. Click no member selected. Add members blade. Select IT administrator. IT cloud administrator. Create. ये क्या है? इसमें मेंबर्स हमने ये 2 डाले जो पहले के ग्रुप्स बनाए ना हमने, IT एडमिनिस्ट्रेटर्स एंड IT सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर्स. क्लाउड और लैब. एक IT क्लाउड और लैब. बैठो उधर. हाँ. आ गया लाइट कि नहीं आया अभी तक? नहीं आया. थक गया ना. इधर ही बैठो. So many fluctuations. IT cloud administrators and IT system administrators को member डालना है. Cloud and system administrators. Cloud administrator and system administrator दोनों को हम member डालेंगे इसमें lab administrators में. वो here. Members. So as I told you that a group can have other groups also as members, right? तो add करके तो इसमें कौन सा IT cloud administrators and IT system administrators, right? दोनों को select किया and they become members of that. Getting Rufi? Yes, sir. Sir, Rupi is disconnected. अच्छा disconnect हो गया. Why he got disconnected? And then ये exercise में फिर बोलते हैं कि बाकी ग्रुप को देखो उसमें ऑटोमेटिकली ऐड हो जाना चाहिए मेंबर्स बिकॉज हमने उसको ये किया है ना डायनेमिक थे ना तो बट हमारे इसमें नहीं होगा बिकॉज आज इज असाइंड वन सो तो मैन्युअली किया तो हमको मैन्युअली वो मेंबर्स ऐड करने पड़ेंगे जैसे आईटी क्लाउड एडमिनिस्ट्रेटर में यूजर 1 ऐड करेंगे और दूसरे में यूजर 2 मैन्युअली ऐड करना पड़ रहा है राइट तो वी गो बैक टू दिस गो टू दिस इसको अनचेक करेंगे members add members यूजर 1 को ऐड किया राइट ये मैन्युअली ऐड करना पड़ रहा है हमको आईटी सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर में क्लाउड एडमिनिस्ट्रेटर्स में यूजर 1 आना चेक में क्लाउड एडमिनिस्ट्रेटर्स ग्रुप में इसमें आई जस्ट रिमूव दिस
ऐड मेंबर्स, इसमें यूजर 2 आएगा। I'll add this user there. Refresh. तो क्लाउड एडमिनिस्ट्रेटर है, उसमें यूजर 1 ऐड करेंगे। क्लाउड एडमिनिस्ट्रेटर्स, मेंबर्स, इसमें ऐड मेंबर्स, उसमें यूजर 1, like this. अरे ये क्या, what did I do? ठीक है, ऐड हो गया वो, राइट। रिफ्रेश वहां से किया, एक्चुअली यहाँ से करना चाहिए था मुझे। कि रूफी डिस्क वापस कनेक्ट हुआ कि नहीं? रूफी लाइट गई होंगी उसके यहाँ पर मोस्टली। ये हो गया। ओके मिनल, क्लियर? Yes, sir. तो टास्क 2 कंप्लीट हो Every गया time हमारा। we have to go to IT Cloud Administrator to add a new member. सॉरी, Every time we have to first go to IT Cloud Administrator and from there we will add a new member. यह ग्रुप है ना, ग्रुप के अंदर जाके फिर मेंबर को ऐड करना पड़ेगा ना। Yes, sir. You have to go to the group and add the member there. Yes, sir. All right? Yes, sir. तो हो रहा है ना बराबर, खाली वो Yes, sir. डायनेमिक Yes. का नहीं हो पाया, तो देखता हूँ से क्रेडिट Maybe कार्ड they का have मामला है ना। changed that. I think they must have changed something. You say now they keep changing things. ठीक है। So task 2 we Yes. completed, then task 3 में we have to make a new tenant, and task 4 में then you have to invite the uh, guest user from the other tenant to this. So Other organization. so we see how we can invite the people from other organization and give access to the resources in our Can we do it organization. today, sir? Huh? Sorry? Can we do it today? नहीं, not today, not today. करते करते इतना जल्दी मत बचाओ। There's some people waiting for me now actually. ठीक है? Sir, I have sent you a message for the last Wait a minute, task wait a A minute, and wait a today. minute, wait a minute, wait a minute, madam.